Okay man, today is the day I'm gonna get rid of all of these and all of these together. Now to be clear, I am doing this for the first time, but I'm doing this in front of a camera जिससे कि अगर मैं कोई गलती करूं, जब मैं कोई गलती करूं तो तुम उसे देख लो and you pretty much know what not to do. और जब तुम खुद ये cleaning up process करो अपने साथ तो कोई गलती ना हो and everything goes perfectly and smoothly. तो पहले neck वाले baby hairs का हिसाब कर लेते हैं, उसके बाद we'll take a look on these bits. तो अभी के लिए इनको मैं ऊपर कर देता हूँ so that we can work with these. Okay, so my plan is to trim out all the baby hairs that are present on my neck, and then I'll use some sort of product to kind of stick these bits back to my hair. I'll use a wax or a spray, I don't know yet, पर पहले इनको trim कर लेते हैं तरीके से and then we'll work with these. मेरे पास यहाँ पे एक trimmer है, बहुत ही basic सा trimmer है, nothing special about this one. I'm pretty sure if you're a guy you will have some sort of trimmer like this one and you can use that. Okay, so as you can see I've got all of my hair in a man bun to start with so that मेरे ऊपर के बाल जो भी मुझे नहीं ट्रिम करने हैं वो नीचे के बालों से separated रहें to begin with. So I'm using a trimmer and a mirror here. Okay, let's start man. I'm scared to hell. I really don't want to ruin my hair. I don't know what will happen but we'll see. तो मेरा प्लान है कि मैं पहले नीचे से अपने बालों को काटना शुरू करूँ धीरे धीरे and then I'll move to the upper hair. So yeah, let's begin I guess. Okay, so as I can see and as you can see मैंने थोड़े थोड़े बाल अपने यहाँ पर छोड़ दिए हैं जिससे कि completely shaved off ना लगे मेरा neck और थोड़ी सी natural वाली vibe यहाँ पर आ सके. Like no one should know I've tried this hard to make this shape, right? So I'm gonna do the same thing on the opposite side here. I wish everything goes right. So I'm pretty much done with these two things and I'd say I've done a pretty decent job considering this was my first time ever doing this. Man, it looks so clean. I'm really happy with the outcome here, and here are the little hairs that I left on purpose to make my man bun look a little more natural. So here are some tips for you guys. अगर तुम पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हो तो भाई ट्रिमर को बहुत धीरे धीरे मूव करना, otherwise you can ruin your hair. और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, अगर तुम्हारे पास क्लिप गार्ड है ट्रिमर का तो पहले क्लिप गार्ड को लगा के अपने बालों को ट्रिम करना instead of going for that zero fade. And yeah, be extra careful with your trimmer if you are a righty and you're using the trimmer with your left hand. Okay, now my neck portion looks really clean. Let's deal with these stuff. So as I was saying, I'm gonna use some sort of hair product. I'm going for the hairspray. और जब भी मैं hair products के बारे में कोई भी वीडियो डालता हूँ तुम में से कई लोग पूछते हैं भाई कौन सा hair spray है, and to be honest I don't really know. इस पर सिमको लिखा हुआ है और उसके just नीचे स्विफ्ट. So here this is the hair wax that I use. Oh sorry, hair spray. तो मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा close tooth comb है और मेरे पास hair spray है. तो पहले मैं इस comb के ऊपर hair spray मारूंगा और उसके बाद अपने बालों को इस comb से comb कर लूँगा. That's so creative. But first let's see what you can or I can achieve using only the regular tight tooth comb. तो ये रहे भाई मेरे सारे flyaways. सिर्फ comb है और comb पे भी कुछ नहीं लगाया हुआ मैंने. Okay, let's see what this does.
मेरे सारे फ्लाईवेज तो कोम से ही चिपक गए, बट आई एम श्योर दिस विल नॉट बी द केस फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे बाल थोड़े फ्रीजी हो, थोड़े डैमेज्ड हो, तो हो सकता है कि कोम से सिर्फ ना तुम्हारी बात बने. सो आई एम गोइंग टू यूज द हेयर स्प्रे एनीवेज फॉर यू गाइस, बट या इफ योर हेयर इज डैमेज्ड एंड फ्रीजी, ओनली द कोम इज नॉट गोइंग टू डू द जॉब फॉर यू. और एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि सिर्फ हेयर ऑयल से हम लोग फ्लाईवेज को टेम कर सकते हैं क्या, एंड आई गेस यस यू कैन, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ हेयर ऑयल ही लगाया हुआ है, कोकोनट ऑयल टू बी प्रिसाइज, and you can see I've tamed all of my flyaways successfully. You can tame your flyaways using only hair oil. सिर्फ hair oil को यूज करके तुम अपने flyaways को तभी tame कर सकते हो जब तुम्हारे hair damaged नहीं है. अगर तुम्हारे हेयर ऑलरेडी बहुत डैमेज्ड हैं और ऑलरेडी बहुत फ्रीजी हैं तो शायद हेयर ऑयल के लिए मुश्किल हो जाए उनको properly काबू में करना. But if your hair is in a really good health, the hair oil will be more than enough to tame all of your flyaways. And in fact, let's do a comparison. यहाँ पे मैं अपने सारे flyaways को निकाल लेता हूँ एक बार दोबारा से, और इस हाफ में मैं only hair spray को यूज करके इनको टेम करने की कोशिश करूंगा, और इस हाफ में मैं only comb को यूज करके करूंगा. तो पहले अपने लेफ्ट और तुम्हारे राइट वाले हाफ को मैं एक बार only comb को यूज करते हुए काबू में करने की कोशिश कर लेता हूँ. Okay, that looks pretty decent to me. अगर तुम्हारे बाल भी कुछ ऐसे ही लगते हैं only comb को यूज करने के बाद, तो I don't think you need to use any product to kind of tame your flyaways. Okay, this is more than enough, guys. Why would you put in any chemicals when you've got these results anyways? Okay, so इस साइड से मैंने अपने flyaways को tame किया हुआ using only comb. मैंने अपने comb के ऊपर कुछ नहीं लगाया हुआ था और अब मैं अपने comb के ऊपर ये hair spray यूज करने वाला हूँ, and we'll see what difference it makes. Okay. I guess I'll have to look closer in the mirror to notice any difference. Wait, I'll do just that. Hey, I forgot to tell you, if you're enjoying this, a like to this video and a sub to the channel will be really appreciated, guys, and it really helps me keep myself motivated to bring you more such stuff. Okay, so there is a difference definitely, पर बहुत ज़्यादा noticeable नहीं है. I guess अगर तुम बिना hair spray के या बिना किसी भी product के अपने फ्लाईवेज को टेम कर लेते हो ओनली यूजिंग द कोम, तो भी कुछ टाइम बाद वो वापस बाहर आ जाएंगे. आई फील लाइक दैट. पर अगर तुम कोई प्रोडक्ट को यूज करते हो या अपने फ्लाईवेज को टेम करते हो तो वो वैसे ही रहेंगे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एंड देयर आर ऑल्सो द एडेड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ हेयर प्रोडक्ट, लाइक आई हैव गॉट मच मोर शाइन इन दिस एरिया बिकॉज आई हैव यूज्ड द हेयर स्प्रे. बट इन द एंड इट इज ऑलवेज अप टू यू गाइस. सो हैव अ क्लोजर लुक एट माय हेयर फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हिच वन डू यू थिंक इज बेटर, द ओनली comb one or the hairspray one. Okay, so today we have successfully dealt with the neck baby hair that were present on my neck like 10 minutes ago, and we have successfully managed to tame all of our flyaways product को use करते हुए और product को ना use करके भी. So I hope you enjoyed this video and really found out something new and interesting today, and with that being said, I'll catch you in the next one.